Ma'am, good afternoon. Good afternoon, sir. Mr. Jayesh, can you hear us? Please unmute yourself. We can't hear you. Unmute yourself. Unmute करिए. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Tell us a brief about अपने बारे में brief बताइए. Ma'am, my name is Jayesh Paraste. I've done my schooling from Raipur, Chhattisgarh. Then I did my graduation in electronics and telecommunication from Sri Shankaracharya College of Engineering and Technology, Bhilai, Chhattisgarh. Passed out in 2015. Then I couldn't get a place, so I looked for opportunities. So didn't get any job, so I found some of my friends doing well with GATE. So I appeared for GATE, and from that I am working in Airports Authority of India, currently posted in Mumbai, Navits unit. What is your profile in Airport Authority of India? मैडम इट इज़ मेंटेनेंस पोजीशन है. मेंटेनेंस हम देखते हैं नेविट्स के इक्विपमेंट्स का. जो भी लैंडिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है एयरक्राफ्ट, उन इंस्ट्रूमेंट्स को देखना, प्रॉपर ऑपरेशन उनका होना, उसको हम देखते हैं, मेंटेनेंस उसका. आप कौन सी स्टेट से हैं? You're from which state? मैम छत्तीसगढ़ से हूँ. छत्तीसगढ़ को राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है. जी मैम. क्या आप किसी और स्टेट का नाम भी बता सकते हैं जिसको अगेन ये राइस बोल ऑफ इंडिया बोला जाता है अपार्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़? अपार्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, यस, एक और स्टेट है जिसको सेम राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है. नो मैम, आई एम नॉट श्योर ऑफ. छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म का इशू अभी भी है? यस मैम, इट इज़ देयर. कौन सी एरियाज में? मैम सदर्न साइड में ज़्यादा है. बस्तर के एरिया है जो वहाँ पर. Any initiatives that have been taken up by the state government to handle this problem of nexalism in the state? Ma'am, as such, specific state initiatives I'm not aware of, but constantly it is trying to remove the problem of Naxals, slowly and gradually. Apart from nexalism, what are the other major issues faced by Chhattisgarh? Ma'am, job scenario is very poor there. Then a lot of tribes, local tribes are there. ज़्यादा मतलब Can you name education. some tribes? Can you name some tribes in Chhattisgarh? Ma'am, Berwa tribe is there, Gond tribes is there, then Maria tribes are there, bison dance is famous for. So it is rich in tribes, but education wise it is poor, and job wise also it is lacking. So those are Okay, Mr. major. Jayesh, what are your subjects of interest, your favorite subjects? Ma'am, digital electronics, analog electronics, control system networks, these are my area of subjects. Okay, Jess. Yes sir. Good afternoon. Good afternoon sir. Can you tell me which type of antennas you are going to use to communicate with the aircraft? Sir, aircraft dipole type of antennas and whip antennas I have also seen, which are used for communication in VHF. Okay, so dipole antenna you have seen. Which dipole antenna? Which? I'm not aware of sir VHF people's Okay, point. so at what frequency that it communicates? It's VHF frequency only. VHF, okay. Suppose there is an antenna and there is some signal that you want to transmit through a transmission line. Yes. Correct. And suppose transmission, the antenna that you are offering, or the antenna that is designed, let us say it is 75 ohms antenna, right? And you have a transmission line, let us say it is 70 ohms. Yes. And you want to transmit the signal to communicate, to establish the communication with the aircraft. Yes. So can you suggest me how you will match these two impedances? Impedance matching techniques we can use in Which transmission. type of technique? Stub matching is there, then double stub matching, but lambda by 4 also is there, matching. Quarter wave mode. Okay. Quarter wave. So can you tell me what is the, so since we have single stub matching, then and we have also quarter wave transformer, right? Lambda by 4 matching. So if lambda by 4 matching is available, then why we require single stub matching? Sir, single stub matching will take extra transmission line as well, which will be placed with respect to the load. लेकिन lambda by 4 में अपने को एक्स्ट्रा ट्रांसमिशन लाइन नहीं लगेगी एज अ स्टब, सो वो बेनिफिट अपने को lambda by 4 में मिलता सिंगल स्टब में कहाँ पे एक से ज्यादा ट्रांसमिशन लगता है? है. सर उसके पैरेलल पे लगेगा स्टब में लोड के.
ट्रांसमिशन Okay, parallel. Okay, so that is only extra thing that we have. हाँ But which one is advantage? Advantage किसमें? एडवांटेज तो सर रिसोर्सेज कम यूज़ हो रहे हैं लैम्डा बाय 4 में, तो उसमें एडवांटेज मैं ज़्यादा बोलूँगा। मैचिंग हमको अगर परफॉर्म मान करना है। लेते हैं कि if the antenna is not resisting, it has some reactance as well. हम्म, Suppose 73 Okay, plus okay. J42.5 ohms I have antenna. So in that case, which should I prefer? Whether I should then prefer you single have to step go for single stub because we have to cancel out the reactance part through the Okay, fine. stub. So have you heard about mast antennas? Yes. What is mast antenna? Mast antenna is placed on top of the equipment antenna. Mast antenna वो उसका काम ये रहता है कि लाइटनिंग वगैरह अगर आती है तो उसको वो ग्राउंड कर देता है, इक्विपमेंट पे जाने नहीं देता है। वो तो लाइटनिंग अरेस्टर का काम। जी जी, ये वो तो लाइटनिंग अरेस्टर का है। मास्ट एंटीना का क्या काम? मास्ट लाइट आई कैन एंटीना के ऊपर में लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है। Yes, sir, yes. बड़े टावर तो वो तो उसका काम है। जी, sir. That is not the part of the antenna to ground the thunderstorm. So मास्ट एंटीना का यूज क्या करते हैं? मास्ट एंटीना, नो सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। Okay, no issue, no issue. Do you know what is Johnson counter? यस सर। What is Johnson counter? सर जॉनसन काउंटर रिंग काउंटर का एक वेरिएंट है जिसमें हम काउंटिंग सीक्वेंस 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स रहती हैं। जॉनसन इसे काउंटर कहीं यूज करते हैं, इसे कहीं यूज है Johnson counter. जॉनसन काउंटर का यूज़ जॉनसन काउंटर का यूज़ कांट थिंक ऑफ राइट नाउ सर। Okay, no issue, no issue. Okay, can you tell me, we have a K map, right? यस सर। Why we use K? सर मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन अचीव करने के लिए। Okay, Boolean suppose कोई expression. बड़ा सा एक्सप्रेशन को आपने मिनिमाइज कर दिया, तो क्या वो ऐसा हो सकता है कि when you are using K map you will get the different type of Boolean expressions? नो नो, इट विल गिव एक यूनिक एक्सप्रेशन ही देता है वो। यूनिक ही होगा, अलग नहीं हो सकता? Are you sure? पेयरिंग अगर अलग की जाए तो डिफरेंट हो सकता है सर। So that is what I am asking कि अगर K map एक हमारे पास बड़ा सा एक Boolean एक्सप्रेशन दे दिया गया, मुझे K map से सॉल्व करना है, तो क्या हमको एक ही एक्सप्रेशन मिलेगा या फिर अलग अलग भी मिल सकता है? डिफरेंट मिल सकते हैं। मिनिमाइज कैसे किया जा रहा है उसके बेसिस पे, पेयरिंग कैसे की जा रही है उसके बेसिस पे। Okay. There is two types of triggering that we use. यस सर। Right? One is called as level triggering and another is called as edge triggering. यस सर। So level triggering और edge triggering होता क्या और उसको कहाँ पे यूज करते हैं? सर लेवल ट्रिगरिंग मतलब जो भी स्टेट चेंज होगा फ्लिप फ्लॉप का वो लेवल पे होगा। एज फार एज इट इज़ 1, उस पे चेंज अगर कोई इनपुट आएगा तो आउटपुट रिफ्लेक्ट करेगा। एज ट्रिगर में सिर्फ ट्रांजिशन पे वो एक्ट करता है, 0 से 1 या फिर 1 से 0 पे। लेवल ट्रिगर्ड अपन लैच में देखते हैं और एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में देखा जाता है सर। ठीक है। Okay. You said that you're one of the favorite subject network also. यस सर। Right. So can you tell me we have some parameters, Z parameter, H parameter, Y parameter. Why I want S parameter? सर एस पैरामीटर का यूज़ मल्टीपोर्ट के लिए यूज़फुल रहेगा सर। एक 2 से ज़्यादा पोर्ट है तो वहाँ पर हम ट्रांसमिशन लाइंस में जनरली ये देखते हैं। In transmission line we have two ports. नहीं मीन्स उस सब्जेक्ट से रिलेटेड माइक्रोवेव थ्योरी में जैसे यूज़ होता है सर, उस पर मल्टीपल पोर्ट्स पे अगर अपने को एनालिसिस करना है तो एस पैरामीटर का यूज़ किया जाता है सर। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल मुझे दो ही पोर्ट पे करना है सर एज गुड एज बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं उसके लिए। Are you sure? या फिर अगर रिफ्लेक्शंस से रिलेटेड पैरामीटर्स अगर अपने को कैलकुलेट करनी है तो वहाँ पर काम आता है रिफ्लेक्शन को। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, can you give me one example of network which is both symmetrical as well as reciprocal? सिमेट्रिक एज वेल एज रेसिप्रोकल। तो भी ऐसा नेटवर्क जो आप सोच सकते हो, कुछ भी हो सकता है, but it should be some network. सिमेट्रिक और रेसिप्रोकल दोनों चाहिए।
हो सकता है पॉसिबल? पॉसिबल तो है सर. आई कांट थिंक ऑफ राइट नाउ एक स्पेसिफिक एग्जांपल. नो नो ऑप एम्प्स के बारे में कुछ पूछ के आपसे. यस सर. आप मुझे ऑप एम्प्स जो है वो बेसिकली आप मुझे बताइए कि ऑप एम्प के अंदर, ठीक है, दो लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प और दो नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प. लीनियर एप्लीकेशन एंड दो नॉन लीनियर. लीनियर तो एम्पलीफिकेशन ही डायरेक्ट लीनियर एक एप्लीकेशन हो जाएगा. फिर करंट टू वोल्टेज या फिर वोल्टेज टू करंट ये एक लीनियर एप्लीकेशन है. फिर उसके बाद नॉन लीनियर अगर एप्लीकेशन देखें तो लॉगरिथमिक ऑपरेशन परफॉर्म करना. और नॉन लीनियर एप्लीकेशन और एक जैसे कोई बात, आप मुझे बताओ कि नेगेटिव फीडबैक लोग ऑप एम्प में लगाते हैं, पॉजिटिव फीडबैक में लगाते जी सर. हैं. एक ऐसा एप्लीकेशन बताइए जिसमें हम ऑप एम्प को नेगेटिव फीडबैक में यूज करते हैं और एक ऐसा एप्लीकेशन बताइए जिसमें हम ऑप एम्प को पॉजिटिव फीडबैक में यूज करते हैं. सर पॉजिटिव फीडबैक में सर शिमिट ट्रिगर में यूज करते हैं हम ऑप एम्प को. और नेगेटिव फीडबैक में जनरल एम्पलीफिकेशन के पर्पस से भी या फिर समिंग के पर्पस से भी यूज़ करते हैं. तो नेगेटिव फीडबैक में आप ये कुछ वर्ड यूज कर रहे हैं बार-बार, एम्पलीफिकेशन. ये एम्पलीफिकेशन क्या होता है, जरा आप इसको डिफाइन करोगे? व्हाट इज एम्पलीफिकेशन? सर जो इनपुट में सिग्नल हम दे रहे हैं सम मल्टीपल ऑफ दैट इनपुट वी आर गेटिंग एट द आउटपुट, ये तो आप एम्पलीफिकेशन. मुझे बताओ, ओके एम्पलीफिकेशन हो गया. हमारे पास दो एम्पलीफायर है, एक बीजेटी एम्पलीफायर, एक पावर एम्पलीफायर. यस सर. ठीक है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको बीजेटी एम्पलीफायर यूज करना है फिर पावर एम्पलीफायर यूज करना है? सर वेरिएशन सिग्नल की अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो पावर एम्पलीफायर में जाएगा वो. और वेरिएशन अगर सिग्नल की बहुत कम है तो वो बीजेटी एम्पलीफायर में यूज़ किया जाएगा. ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, सर. Thank you, Sir, good afternoon. Jayesh, good afternoon. यस सर. Jayesh, please you just tell me what is the difference between controller and compensator? Is it they both are same or different? सर दोनों सेम है पर एक मैन्युफैक्चरिंग के पहले रहता है और एक मैन्युफैक्चरिंग के बाद आता है. कौन कंपनसेटर पहले रहता है, कौन बाद में रहता है? कंट्रोलर ऐसे- सर कंट्रोलर पहले रहता है. वो अपन अपनी रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए हम बनाते हैं. अगर विद द टाइम जब काम कर रहा है सर्किट और वो डेविएट हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है तो कंपनसेटर की हेल्प से अपन उसे वापस रिक्वायर ऑब्जर्वेशन पे लाने की कोशिश करते हैं. So you just tell me integral controller can I use directly means alone? इंटीग्रल कंट्रोलर. हाँ जी. सर इंटीग्रल अगर स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस अगर बेटर करना है तो अपन इंटीग्रल कंट्रोलर यूज़ करेंगे सर. Okay. But integral controller क्या मैं directly alone use कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन था. नहीं सर, उसको हमें एज अ हेल्प मींस सर्किट के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा गेन और फीडबैक के अरे साथ. जयेश भैया, सर्किट के साथ तो यूज कर ही रहे हो, बट क्या सिर्फ अलोन इंटीग्रल कंट्रोलर यूज किया जा सकता है या प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगाना होगा साथ में? Sir, I'm not able to understand the questions. Means not getting the idea about this. इंटीग्रल कंट्रोलर, Yes sir. देयर इज पीआई कंट्रोलर. Yes sir. Why we are introducing proportional with integral? Why not integral alone? Simple question. If you don't know the answer, then it's different thing. No sir, I'm not able to recall. Okay, no problem. Can I introduce the controller or converters in feedback? Controller and converters in feedback. Controller, I don't think so sir. Compensator we can in the feedback. Do you know feedback derivative controller? Feedback derivative controller. Okay, leave it.
You just tell me any controller which is equivalent to a particular compensator. Any controller which is equivalent to compensator. Any compensator. Sir, lead compensator is equivalent to integral controller. Lead compensator is equivalent to integral or derivative or differential. What do you say? Leave it. Okay, please study these concepts well. And now tell me, what is the need of filters in the circuit? Sir, filters are required in the circuit because we want to select particular frequencies, set of frequencies, and we want to reject some of the frequencies. So depending upon Any example? Any example in a practical life? I used to experience. If you will say that, I will understand better. Sir, notch filters are there, which Now my question to you: is it possible? What is parallel resonance? parallel resonance. Yes. Resonance we face in the parallel circuit, parallel RLC circuit. I am still not getting the answer. I am asking what is parallel resonance, and you are telling where it happens. I am asking what is actually the parallel resonance. Sir, parallel resonance means the parallel circuit RLC in which the frequency in which the resistance the circuit behaves as purely resistant circuit, and Purely resistive circuit. Any example? Can you recall parallel resonance? the parallel RLC circuit, sir. Okay. Any circuit, standard circuit name which follows the parallel resonance concept? Standard circuit. Have you heard before? Tank circuit. Tank circuit. Tank circuit I can think of. Where do we use tank circuit? Tank circuit. No sir, I am not able to recall. Okay. In our home, the appliances are connected in series or in parallel? They are connected in parallel. Yes, they are connected in parallel. So can I get parallel resonance here? At a specific frequency, we can get parallel resonance. But What is the supply frequency you are getting at your home? it's 60 hertz, sir. At your home, you are getting 60 hertz. What is the voltage rating you are receiving at your home? Around 230 volt AC. AC or DC? AC, sir. Why AC? Why not DC? Sir, AC. Single phase AC or three phase AC? It's a three-phase AC, I think. Okay, star or delta? Not sure of, sir. Okay. What is BharatNet project? Bharat Internet project, sir. BharatNet project. Sir, BharatNet project is the project by government, means it is for कि इंटरनेट सारे रूरल एरिया में भी हम प्रोवाइड करा सकें, वो प्रोजेक्ट भारतनेट प्रोजेक्ट में आता है, सर. What is India Mobile Congress? It's in a current news. इंडिया मोबाइल कांग्रेस, नॉट हर्ड ऑफ, सर. Okay, this is all from my side. Over to Rupa, ma'am, please. Okay, fine, Jayesh. What are your hobbies? Ma'am, playing means watching movies, web series, and playing video games. Okay. When you talk about the net series or the web series, do you think these OTT platforms need some kind of censorship? And any initiatives have been taken up by the government of India? Ma'am, partially yes, it is required, but it is depends upon the audience as well, what to watch and what to not watch. So we can't say means we have to censor these things. As per the initiatives by government, I've seen recently they have introduced different certificates like 13 plus, 16 plus, and 12 plus as well, which was not there before. Okay, fine. Jayesh, my last question, why internet services? What is the motivation to be here? Ma'am, it's a better position for me. Decision making ability I'll get here.
handling projects, bigger projects which will take a lot of time here in authority for me to reach that position. So there it is a better opportunity for me. That's why I am trying for that. Okay, fine. Jayesh, showing you the stance over here. But Jayesh, from the non-technical aspects, you seem to be a fair person, right? Have some variety about the state regarding the agriculture of state, the problems of state, what are the major issues, what are the initiatives. These are some general questions which are asked by the chairperson, okay? Okay. But then they will not have that kind of weightage as your technical performance will, right? So how do you perform technically? Let's ask that. Personality-wise, you seem to be okay. You have a balance on speech, your command and language is still okay, right? Okay. तो वो इसका issue आपके लिए नहीं है, लेकिन technical कैसे किया वो बता सकते हैं. हिमांशु sir. Jayesh. Yes, sir. Thank you, ma'am. Jayesh, see, technically, your way of communicating or way of presenting, it was good. You are a good candidate in that point of view. And the answering was also good. You have answered a lot of questions from my side. And I would suggest if any answers you are not sure about, you should not attempt. You can say, sir, I don't know, I am not there. Few questions you told. So this thing, Okay, sir. and obviously the scope of improvement is everywhere. So revise your topics again and again. Okay, sir. So if you are candidate, you can do it. Rest, Sajal sir. Just somewhere about I feel you take time and then reply, and you used to give wrong answers as well. So take care. Don't give wrong answers. Okay. And if you want to guess a particular question, you can request. The rest all the things are fine. You are doing well. Must revise the subject. Okay. You will score better. Okay. All the very best. Okay. Thank you, sir.